Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alhamd Dynamic Word. My name is Muhammad Faisal. I am your English teacher. Today our last lecture of Unit 1. This is lecture number 4, class 10th. Today we are going to wind up our Unit 1 and the lesson 1 entitled Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के अलंबरदार. आज हम लास्ट 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन देखेंगे और जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम देखेंगे. इसके अलावा कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को भी हम देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल. पैराग्राफ नंबर 7, पेज 4, लेसन 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, an embodiment of justice. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इफ़ आई ओड समवन टू एनीवन, अगर मैं आप में से किसी का कुछ रखता हूँ, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या मैंने किसी की जायदाद को या इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है, माई पर्सन, मेरी ज़ात, माई ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हेयर, यहाँ पर मौजूद हैं, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी, वो मुझसे अपना बदला ले सकता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात की वजाहत कर दी कि ये दुनिया वो जगह है जहाँ पे आप अपने मामलात को रिजॉल्व कर लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ साल्वेशन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, बिकॉज नेक्स्ट वर्ल्ड इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड and this is temporary time where you are living in this time. If you have opportunity to remove your mistakes, then you should remove your mistakes on this planet, in this world. Otherwise, the person who is unable to remove his or her mistakes and sins in this world, he or she will be punished in the next world, which is in fact everlasting. इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अगर मुझसे किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो, किसी की इज़्ज़त को, किसी की जायदाद को, तो वो मुझसे इसी दुनिया में बदला ले सकता है. वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने ऐलान किया, इफ़ आई ओड समवन टू एनीवन, और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अगर किसी का मेरे पास कुछ है, या मैंने किसी के साथ कोई बुरा किया है, या मैंने नुकसान पहुंचाया हो किसी की जायदाद को या इज़्ज़त को, तो मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त, मेरी जायदाद, सब कुछ यहाँ है, वो मुझसे इसी दुनिया में बदला ले सकता है. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे बदला ले सकता है इस दुनिया में. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी. Only one person demanded a few dirhams, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया, which were paid to him, जो उसे अदा कर दिए गए. पैराग्राफ नंबर 8,
Allah's messenger sallallahu alaihi wa alihi wasallam proved by his own example. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا that کہ no one could be more firm for justice than him. کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest, حتیٰ کہ اگر وہ آپ کے اپنے مفاد کے خلاف ہو اور the interest of those یا ان کے مفاد کے خلاف ہو who were near and dear to him جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور پیارے ہیں. He decided every case brought to him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقدمے کا فیصلہ فرمایا جو آپ کے پاس لایا گیا by friend or foe with justice. چاہے وہ دوست کی طرف سے ہو یا دشمن کی طرف سے، انصاف سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقدمے کا فیصلہ انصاف سے فرمایا، چاہے وہ دوست کی طرف سے لایا گیا ہو یا دشمن کی طرف سے. without fear of favor، ہر قسم کے طرفداری کے خوف کے بغیر. a person of such magnitude، اس قسم کی ہستی، اس قسم کی عظمت والی ہستی transcends the barrier of time and space، زمان و مکان کی رکاوٹوں سے بلند ہوتی ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. مختلف عمر کے افراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے مختلف شعبوں کی سرگرمیوں میں. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن مجید برہان رشید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس شعبے کو بڑے ہی نمایاں انداز میں پیش فرماتا ہے. Indeed, in the messenger of Allah محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم you have a good example. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے to follow، پیروی کے لیے. for him، اس کے لیے خاص طور پر who hopes for the meeting with Allah، جو یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی and the last day، اور روز آخرت کے ہونے پر and remembers Allah much، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے. So dear students, this was our today's lecture regarding translation. I have provided you the translation of two paragraphs, paragraph number 7 and paragraph number 8. This was our last lecture. Now let's move towards the difficult words I have extracted for you from these two paragraphs, and then we will move towards the question and answers, remaining question and answers of this lesson, because some questions and their answers we have discussed in our previous lecture, means in our third lecture. This is our fourth lecture. In this lecture we are going to discuss remaining question and answers of this lesson. First of all, proclaim. Proclaim means promulgate. Promulgate means اعلان کرنا. Property, estate، جائیداد. ڈیمیج، ہارم، نقصان پہنچانا. میگنیچیوڈ، ڈگنیٹی، عظمت. ٹرانسینڈز، سرپاس، بلند ہونا. Then let's move towards today's questions and answers. What made non-Muslims bring their suits to the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam? وہ کیا چیز تھی جو نان مسلمس، کفار کو اس بات پہ اکساتی تھی کہ وہ اپنے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے تھے؟ Non-Muslims brought their suits to the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and he decided cases in accordance with their law. مشرکین،
कुफ़ार अपने मुकदमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए लेके आते क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकदमात के फ़ैसले उनके कवानीन के मुताबिक करते। Then how does the Quran describe the personality of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? किस तरह से कुरान मजीद बुरहान रशीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बयान फरमाता है। Indeed, in the messenger of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow. यकीनन तुम्हारे लिए पैगम्बर खुदा की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि यकीनन तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है पैरवी के लिए। Dear students, this was our last lecture on Unit 1 and I hope you have tackled it. Now give me permission to leave. We will meet in our upcoming lectures. Thank you students. May Allah bless you.